Okay, children, now by using properties of determinants in 6 onwards, by using properties of determinant, we have to show LHS equals to RHS. अब ये नहीं कह रहा कि without expanding, but we have to use the properties. Initially, obviously, we'll use properties, and then wherever we require, we can expand also, because there is no restriction of not opening the determinant, not expanding. ठीक है, तो we can expand also here. Like sixth one is there, a determinant which we have to prove equal to 0, which I have already written here. It is given 0. I have copied the LHS and I'm taking that as del, right? 0 minus a b, a 0 c, minus b minus c 0. ठीक है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, but what I am doing here, I am taking minus common from R1, from R2 as well as from R3. ठीक है, taking negative sign common from R1, R2, R3. Then del is equal to 3 times minus. You know that there is a property that if we take minus common from any particular row or from any particular column, the value of determinant gets, the sign of determinant gets changed. ठीक है, अगर एक रो से लेते हैं तो एक माइनस आता है बाहर. We are taking 3 times, so it will be 3 times negative. Minus, 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 and the values elements inside becomes 0, कोई sign change नहीं होगा. Minus a, and this becomes positive b, a 0 c, minus b minus c 0. As it is 3 times negative, we can write del is equal to negative of this 0 minus a b, a 0 c, minus b minus c 0. Then you are going to write one more property you have, that if we interchange the rows and column, first property only this is, if we convert the rows into columns, then the value of determinant remains unchanged. So interchanging, हम सारी रोज एंड कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, तो कोई साइन चेंज नहीं होता है. ठीक है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, we get del is equal to negative of 0 minus a b, a 0 c, minus b minus c. First row I have made first column 0 minus a b, second row a 0 c, second column बन गया, minus b minus c 0 has become the third column. And you can see that's what del is. The same value is there of del. इसी को तो हमने del consider किया था. Del is equal to this only, isn't it? So I can write del, what I can write here, del is equal to negative of del, isn't it? ये हमारा del itself, this much is del itself, and outside we have minus, so I can write del is equal to minus of del, or I can say del plus del is equal to 0. Twice of del is equal to 0, or del is equal to 0 by 2, that is 0 itself. Hence proved, hence verified. ठीक है, क्योंकि 0 हमारा क्या है, RHS है. तो ऐसे आप कर सकते हो. यू कैन एज यूजिंग प्रॉपर्टीज कह रहे हैं तो आप कोई और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, और जो आपको स्ट्राइक करे. ठीक है, तो यहाँ पे आई थॉट ऑफ टेकिंग माइनस कॉमन. Second part I am taking, in which we have to prove this is equal to, this is the given determinant which I will take as del. This is the left hand side of that particular problem, and in the right hand side we have to obtain for a square, b square, c square. ये हमें लेके आना है. ठीक है, so what we are going to do here, we can observe that a is common in the first row, b is common in the second row, and c is common in the third row. तो एक abc तो हमें यही मिल गया. ठीक है, taking a comma b comma c common from r1 comma r2 comma r3 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इनमें से हमने ऑर्डर वाइज जो है ABC बाहर निकाल दिया. देन डेल इज इक्वल टू, पहली रो से A आया, फ्रॉम सेकेंड वी गेट B, एंड फ्रॉम थर्ड वी गेट C. व्हाट वी आर लेफ्ट विद इनसाइड देन, A नेगेटिव B C, नेगेटिव A B C, A माइनस B C, A माइनस B C, C कॉमन लिया तो A B माइनस C, A B माइनस C. नाउ यू कैन सी we can take a from the first column, we can take common, B we can take common from the second column, and C we can take from the third column. ठीक है, यहाँ पे आपको like in elementary row transformation I have told you in matrices that do not use sometime
property along rows and sometime along columns, ठीक है. बट हियर देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन. आप रो वाइज भी लगा सकते हो, कॉलम वाइज भी लगा सकते हो. एक साथ नहीं लगाओगे कि आपने R1 में भी लगा दी और C1 में भी लगा दी. ईदर यू विल यूज इन rows in a particular step or in columns in a particular step, ठीक है. तो now I will take A common from C1, B from C2 and C from C3. Taking A, B, C common from C1, C2 and C3 respectively, ठीक है. तो डेल क्या आ जाएगा, ए यहाँ से आएगा, बी यहाँ से, सी यहाँ से. ए के बी सी ऑलरेडी है तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. -1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. Now we can expand also, but we know if we make zeros here the calculation will become more easy, ठीक है. So what I am doing, I am adding R1 with R2. What will be the use of this? यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी, and then we'll expand along R1, ठीक है. चाहे तो आप R2 में भी लगा दीजिए, नहीं R3 में लगा दीजिए. आई एम यूजिंग इन 1 ओनली क्योंकि मुझे जीरोस मैक्सिमम मिल जा रहे हैं ना. R3 में भी लगा देते हैं. R2 में तो नहीं लगाना चाहिए बिकॉज R2 इज ऑलरेडी इन्वॉल्वड है, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन आई एम यूजिंग इन R3 दैट R3 प्लस R2 आई एम डूइंग, ठीक है. तो मैक्सिमम जीरोस हमें मिल जाएंगे. डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. R1 plus R2 if you are doing, this becomes 0, this becomes 0, this becomes 2. 0 0 2. No change in R2. Here 1 1 2 minus 1 plus 1 0 again. Here also. अब आप चाहो R1 के along खोल दो या आप चाहो R3 के along. तो expanding along R1, I am expanding along R1. This is positive है ना, इसमें 1 1 होता है, 1 2 होता है and then 1 3. Positive, negative, positive. So this is A square B square C square into 2. देन इसके साथ क्या डिटर्मिनेंट आएगी, यू विल डिलीट दिस रो, विच रो, दिस रो एंड दिस कॉलम. सो यू आर लेफ्ट विथ 1 -1 2 and 0. 1 -1 2 and 0 that is equal to A square B square C square into 2. 1 0 is a 0 minus 2 1s are 2, negative 2, negative negative will become positive. So you got 2 2s are 4 inside and overall you get 4 A square B square C square and that is the right hand side, ठीक है. So this way you have to do the questions here. Question number 8 have 2 parts. I will make you do the second part only, right?